So we are looking at BEE, that is Basic Electrical Engineering. Before, prior to previous years, it was called as BEEE, Basic Electrical and Electronics Engineering. So this is a common subject for all branches in the first year of engineering. So whether you are doing civil, mechanical, computers, IT, EXTC, biomedical, whatever you are doing, the first year is common to all the students. That's why this is one of the subjects that we need to study on a common basis. That is Basic Electrical Engineering. It has a code that is FEC 105. So you have to remember the code as well when you start studying. And its practical is FEC 104. So this will be taken by me and Professor Kishan for first year engineering. Let me give you some more details about it. The entire subject of BEE is for 150 marks as per MU. MU is Mumbai University. So we have 150 marks, which is distributed on the basis of, we have for DC circuits. So if you look at the topics that I'm looking at, we have DC circuits. This, what I have written here, is the number of hours. जितना ज्यादा hours होता है, उतना उसका weightage आपके पेपर में होता है. So in engineering, it's always like that. When you get the syllabus, they will always tell you how many hours is for each topic. So we have 5 topics in this subject of basic electrical engineering. DC circuits, that is direct current, AC circuits, alternating current, 3-phase circuits, single phase transformer, and DC machine. This is the numbers allotted to it. So it's 12 hours for DC circuits, 10 for, and so on. And as far as the right side is concerned, so the total marks of your theory paper is 80 marks, which is a 3 hours paper. You have 2 internal tests, which is conducted by colleges, which will be 20 marks of 1 hour each. And this paper is completely set by the college. This is set by the university. The first test will contain 40% of the portion on the left. And after completion of 35%, the second test will be conducted. ये जो इंटरनल टेस्ट होता है, जो 20 मार्क का होता है, इसके 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे. और ये जो 2 टेस्ट है, इसका पासिंग मतलब एवरेज निकालते हैं, एवरेज 8 से ज्यादा होना चाहिए. So the passing for the internal test is separate and the passing for the external examination is separate. इसका पासिंग जो 80 मार्क्स का होता है, उसमें आपको एटलीस्ट 29 लाना है. और ये जो होता है 20, उसमें आपको एटलीस्ट 8 मार्क्स लाना है. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टेस्ट आप स्किप नहीं कर सकते. मेडिकल लीव्स एंड अदर लीव्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर इंटरनल टेस्ट. कोई भी तरीके का लीव से आप इंटरनल टेस्ट भी यू हैव टू पास एज वेल एज दिस. टर्म वर्क जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, जो टीचर आपको देती है, जो प्रोफेसर रहेगा कॉलेज में, वो आपको 25 मार्क, मतलब 10-10-5 की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी. और दूसरा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम या जो वाइवा होगा, उसके 25 मार्क्स होंगे. इसकी वजह से ये टोटल पेपर जो BEE का है वो 150 मार्क्स का होगा. सो आई रिपीट अगेन, 80 मार्क्स एक्सटर्नल थियोरी एग्जाम होती है. इंटरनल टेस्ट 20 मार्क्स की 2 टेस्ट कंडक्ट की जाएगी. 25 की टर्म वर्क होगी और 25 मार्क्स का ओरल होगा. सो टोटल 150. एनी डाउट्स ओवर हियर? आई एम मूविंग अहेड. तो ये हमारे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है, जिसमें हम आज जो चालू करने वाले हैं वो है DC सर्किट्स, और किशन सर AC सर्किट्स चालू करेंगे. So, क्योंकि वो मेजर 2 चैप्टर्स हैं. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन पेपर. जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है वो किस हिसाब से आने वाला है? टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चंस होता है, 20 मार्क्स ईच का, मतलब आपका पूरा पेपर 120 मार्क का पेपर होगा. उसमें आपको 4 करने हैं. 6 में से ऑप्शनल है, आपको 4 करने हैं, बट वो 4 में भी क्वेश्चन नंबर 1 सबके लिए कंपलसरी है.
और क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सेट होता है कि 2 मार्क से लेके 5 मार्क तक का क्वेश्चन होता है, जो पूरे पोर्शन, मतलब पूरा जो पोर्शन है उसको लेके होता है। मतलब जो भी क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन ऑल द चैप्टर्स। फिर जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होता है, मतलब 4 क्वेश्चंस है, उसमें से एक कंपलसरी हो गया, तो 3 बचते हैं, और वो मिक्स्ड नेचर के होते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2A 2B, तो 2A अगर उन्होंने डीसी सर्किट का डाल दिया, तो 2B हो सकता है उन्होंने 3 फेज का डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3A मान लो एसी सर्किट्स का डाल दिया, तो 3B जो है वो सिंगल फेज होगा। तो इस तरीके से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिक्स नेचर के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो वेटेज है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेक्चर आवर्स मेंशन्ड इन द सिलेबस। सो जितना सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे तो डीसी सर्किट को है, और उसके पीछे एसी सर्किट है, फिर 3 फेज है और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। जो आपको एसी सर्किट पढ़ाता है वही आपको 3 फेज पढ़ाएगा, बिकॉज ये को रिलेटेड चैप्टर्स हैं। So these chapters have to be taken by the same person. Now what you need to buy? आपके पास ये कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है। ये एटलीस्ट आप जल्द से जल्द खरीदेंगे तो आपको थोड़ा सा इसको सीखने के लिए टाइम लगेगा। दिस इज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल कैलकुलेटर। इसमें फंक्शंस है जो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम के टाइम पे आप किस तरीके से फास्ट, लगने के लिए वो 3 घंटे का पेपर है, बट बच्चे खत्म नहीं कर पाते पेपर। सो वन ऑफ द रीजंस इज उनका कैलकुलेटर पे जो स्पीड है वो कम होता है। वी नीड अ कैलकुलेटर। हम यहाँ रफ कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट आंसर दिखाने पड़ते हैं। The one calculator that you can use for the exam is FX991 ES Plus. इसको आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर है। इसके बिना आप एग्जामिनेशन हॉल नहीं जा सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम, बिकॉज यही यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामेबल कैलसीज भी मतलब अवेलेबल है मार्केट में, बट यू हैव टू यूज FX991 ES Plus ओनली। Another calculator which is now allowed is FX991 EX. ये जो मैंने पिक्चर दिखा है ये अलाउड है आजकल। So you can either buy this one or you can buy FX991 ES Plus. So majority of the students will refer to both of this. So ये दो कैलकुलेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका 4 years of engineering में आपको ये कैलकुलेटर चाहिए, whichever branch you're doing. You need this because for your practical exams or for your examinations, for all that you need this particular thing. यहाँ तक किसी को डाउट है अभी तक, whatever I have said, because then I can move to the chapter. So let me begin. The chapter of DC circuits, which is direct current circuit, consists of 10 topics. Out of the 10 topics, I think one topic you can see here and you are very well aware of, it is Kirchhoff law. फिर आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेज है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, मेश एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस है, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार है, कुछ लोगों को पता रहेगा ये, एंड बाकी 4 थियरम्स है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स हैं, आपने थोड़ा बहुत ये थियरम का नाम तो सुना होगा। सो नाउ आई एम बिगिनिंग विथ द डीसी सर्किट्स पार्ट। सो आई एम बिगिनिंग विथ किरचॉफ लॉज। I hope you have a notebook in front of you. All of you have a notebook. Can you keep a notebook in front of you? Yes, thank you, Dipesh. Yeah. Please keep a notebook in front of you, because it is very much required that if you have a notebook, it will really help. Okay. Okay. Thank you, Akash. Yeah. So this is the 10 topics which you can take down.
I will pass on the syllabus copy, but I just want you to know in what form we are going. Just roughly take down the topics, because anyway DC is common to all branches, and you will get an idea of how to go about. Done? Just let me know when it is done. Okay. So let's start with Kirchhoff law. Now, I mean to say the basics basically. So let's come to independent sources. So whatever you're going to do, there are something called dependent sources also. जैसे कि आपने बीजेटी किया है. BJT, I mean, you have done transistor in semiconductors. ट्रांजिस्टर का फॉर्मूला था IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, अगर आपको याद है. इसका मतलब है वो IB जो है वो IC पे डिपेंड करता था. तो वी कॉल ट्रांजिस्टर एज अ डिपेंडेंट सोर्स. In the subject of BEE, basic electrical engineering, you will be studying only independent sources. लेफ्ट साइड पे आपको जो दिख रहा है, this is independent current source. ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है. इसका सिंबल आप बना के रखिए, बिकॉज दिस सिंबल दैट वी ड्रॉ, दैट इज अ सर्कल एंड एन एरो इनसाइड, is the representation of a current source. So I can write this as 4 amperes, 10 amperes. This is the representation of the current source. आपने ऑलरेडी ये सब देखा है, बिकॉज आपने whenever you draw battery current electricity chapter या EMI, you have seen this. This is on the right side, it's a voltage source. तो इसको इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कोई भी दूसरे वैल्यू, सर्किट के कोई भी दूसरे वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते. So that's why these are called as what? Independent voltage source and independent current source. And अगर वाइवा में पूछा, then you should say it is a two terminal network element. Two terminal network element. दो terminal है इसके. So it's a two terminal network element which is independent of any other value in the entire circuit. So that's why it is called independent current source and independent voltage source. Moving on, they ask you what is the difference between a network and a circuit. कोई मुझे बताएगा? नेटवर्क एंड सर्किट, इन दोनों में आपके हिसाब से फर्क क्या होगा? जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, द इंटरकनेक्शन of two or more circuit elements, that is, you can see here, if I join yes, Shubham. Anyway, the video is being recorded, so you can see it later also. Yeah. Done? So when you're talking about a network मतलब आपको आंसर देना है एग्जाम में. A network is an interconnection of two or more elements. So this will be asked in the Viva, not in the main exam.
So what is an electrical network? It is an interconnection of two or more elements. That means here what you see is nothing but a network. और अगर यही नेटवर्क का एक क्लोज्ड पाथ आ जाता है, ओके, एक क्लोज्ड पाथ आ जाता है, तब हम उसको सर्किट कहते हैं. सो द राइट साइड is a circuit and the left side is a network. I hope you will remember this. So whenever I talk about network, it is the interconnection of one or more circuit elements. And when we are talking about a circuit or a loop, when we talk about, then you have to understand it is pertaining to a closed path. Next word, linear and non-linear elements. By the name of it and by the characteristic which I have given on the screen, where I am saying that linear elements is nothing but those elements which have a linear relation between voltage and current. So can you all tell me which are the linear elements? Can you all think? कौन से elements में आपका voltage और current का relation linear है? Anyone? Yes, Priya. Yes, Yashvi. So when you're talking about linear elements, it's basically resistor, inductor, capacitor, which follow, मतलब इसको हम कहते हैं ओमिक. Rightly said, very good. मतलब ये जो है, ये एलिमेंट्स कोई भी मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा. सो ऑर्डिनरी रेजिस्टर्स बोलते हैं हम लोग, या ऑर्डिनरी रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स को लीनियर कहते हैं. So you have seen the resistor. So this is a linear, you have seen the color band wala. So this is a linear device. What you see here is the different types of inductors, which I think you are aware about the inductor. So inductor जो है, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि वो linear है. This is a capacitor, a normal capacitor. So we can say that this is linear. अब मैं non-linear की बात करती हूँ. So when I talk about non-linear, इसमें से कोई ऐसा डिवाइस है जिसको आप पहचानते हो? I'll just number them so I can tell you what they are. इसमें से कोई ऐसा है जिसको आप पहचानते हो? Anybody? 1, 2, 3 और 4 में आप किसी को पहचानते हो? Third is diode, says Akash. Yes, correct. Third is diode. Diode is very correct. क्योंकि डायोड लीनियर नहीं है. उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक आपको याद है तो वो कुछ ऐसे जा रहा था, ऐसे. सो वो लीनियर नहीं है. ओके. फर्स्ट वन इज कॉल्ड VDR. VDR मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर. फर्स्ट इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर. This is called as a VCR, that is a voltage dependent, or varactor कहते हैं हम लोग उसको. You know, it's a voltage dependent capacitor. Let me call it as a varactor because that would be the right name for it. This is a diode, like you have said. Yeah, Nikhil, very good. Nikhil has identified the fourth one. The fourth one is light dependent resistor. इसको LDRs कहते हैं. लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. तो इनका सबका जो नेचर है, या जो सेमीकंडक्टर नेचर होता है, अगर आपको याद है तो इसका नेचर कभी भी लीनियर नहीं है. ऐसा कुछ ग्राफ आया था. ऐसे ग्राफ्स आपने देखे रहेंगे बुक में. दे आर नॉट लीनियर. उनका VI कैरेक्टरिस्टिक वाज नेवर लीनियर. इट वाज समथिंग इन दिस नेचर. So that is the current elements, or these are the elements in an electrical circuit which are non-linear, and whatever you saw here is linear. So linear और non-linear का difference पता रहना चाहिए. The next type that they ask in your Viva is active and passive elements.
So people just take it, they don't answer properly, so lose marks on this. So I'm going to tell you that active, by the definition of it, can you identify kiski baat ho rahi hai? It is capable of, an element which is capable of increasing the level of the signal energy. आपने ऐसा कुछ भी पढ़ा है क्या जिसमें आपके सिग्नल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है? एंड इट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय ओम्स लॉ. ये आपके एक्टिव डिवाइसेस है. कैन एनीबॉडी थिंक अबाउट विच एलिमेंट आर दे टॉकिंग अबाउट? ये आपने पढ़ा है. अगर मैं पूछ रही हूं मतलब आपने पढ़ा है. कौन से एलिमेंट्स, कौन सा वो एलिमेंट है? यस, तन्वी एंड प्रिया, वेरी गुड. वी हमने पढ़ा है एक्टिव मतलब एम्पलीफायर. उसको हमारी भाषा में बीजेटी कहते हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसको बीजेटी कहते हैं. सो जो केपेबल होता है टू इंक्रीज द सिग्नल एनर्जी, जिसको ये सिंबल आपने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. अनदर एग्जाम्पल इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. वो भी है. दिस इज कॉल्ड फेट्स. So you'll be studying all this in detail in the later semesters. It is again common for all because ये बहुत base है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए. These are called active devices or active elements. And one more is there, if you are electronic student, it is called op-amps. आपने देखा रहेगा op-amps. Operational amplifiers कहते हैं उसको. तो please याद रखिए BJT, that is bipolar junction transistor, JFET, इसको फेट भी बोलते हैं या जेफेट बोलते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, या ओपैम्स, इसको ऐसा लिखते हैं ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स. आई एम श्योर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आप ओपैम्स के आपने थोड़ा सा पढ़ा है. तो जहां एम्पलीफिकेशन होता है उसको हम एक्टिव कहते हैं. और जो भी आपको दूसरे एलिमेंट्स पता है, जैसे रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, वीडीआर है, एलडीआर है, थर्मिस्टर है, ये सब कुछ पैसिव में आ जाएगा. इज दिस क्लियर? Active elements cannot be described by Ohm's law, but passive elements can be described by Ohm's law. मतलब आपको ऐसा भी सोचना है कि पैसिव और लीनियर को साथ में ले सकते हैं. So when I say passive, you're thinking about normal your resistors, capacitors, inductors. They don't have the ability to amplify the signal. While your active, A for amplifier, will have the ability to amplify that particular signal. The next word is unilateral and bilateral. Unilateral or bilateral में, I'm going to write it down. You can think, what am I talking about? If the magnitude of current flowing through a circuit element is affected when polarity of voltage source is changed, then that element is called unilateral. कोई सोच सकता है इसका एग्जाम्पल क्या है? आपने किया है, नहीं तो आई विल नेवर आस्क. If the magnitude of the current, yes Priya, very good. If the magnitude of the current flowing through a circuit element is affected when the polarity of the voltage source is changed. आपने किया है और आपने किया है कि ये जो है, कौन है ये? कौन है ये?
डायोड, इसको बहुत फर्क पड़ता है कि आप बैटरी कहाँ लगाते हो। कभी फॉरवर्ड बायस होता है तो कभी रिवर्स बायस होता है। मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर आपको याद है, डायोड इज, इट्स लाइक अ स्विच। जब पी को पॉजिटिव मिलेगा और एन को नेगेटिव मिलेगा तो ही हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, तो हम बोलते हैं कि स्विच बंद हुआ। मतलब डायोड इज अ यूनिलैटरल डिवाइस। Current flows through the diode only in one direction. इसलिए it's a perfect example for unilateral element. अभी रेजिस्टर पकड़ो। रेजिस्टर को कोई फर्क पड़ता है कि आप बैटरी क्या करते हो? आप रेजिस्टर को ऐसे लगाओ, बैटरी आप यहां लगाओ ऐसे। आप रेजिस्टर ऐसे लगाओ और बैटरी को उल्टा कर दो ऐसे, कुछ फर्क पड़ेगा? रेजिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पोलैरिटी चेंज किया, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया, बट जो मैग्नीट्यूड होता है रेजिस्टर का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस एलिमेंट को हम बायलैटरल कहेंगे। सो आप रेजिस्टर का नाम सोचो अभी, क्या कैन यू क्लब एवरीथिंग टुगेदर? रेजिस्टर इज अ बायलैटरल पैसिव लीनियर एलिमेंट। आर यू गेटिंग इट? So as electrical engineers, you have to know this. As engineers of every field, you have to know what is the meaning of network and circuit. What is the difference between linear and non-linear? What is the difference between active and passive? What is the difference between unilateral and bilateral? Clear है? Because in many of the definitions, जो सर्किट के डेफिनेशन होंगे, जो थियोरम्स के डेफिनेशन होंगे, वो ये वर्ड्स को यूज करेंगे। तो तभी क्लिक होना चाहिए कि फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या समझाया गया था, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, यूनिलैटरल मतलब डायोड है और बायलैटरल मतलब रेजिस्टर है। नाउ कम्स एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क। आई हैव यूज्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स हियर। मैंने आपको एक्टिव पहले ही बताया था क्या है। A network which contains at least one active element will come under, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हम एक एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं, और जो नहीं कंटेन करता है उसको हम पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। I repeat, a network which contains at least one active element, and that active element can be an independent voltage source, ऐसे आपको ड्रॉ किया था, या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब ये रहना चाहिए भाई। अगर आप, मैंने आपको एक नेटवर्क दे दिया और उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है, तो हम उसको पैसिव नेटवर्क कहते हैं, नहीं तो हम एक एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। There is one more word which you should know. There is one more word which you should know. उसका नाम है lump. वो भी आप लिख के रख सकते हैं, lump and distributed elements. ये बहुत important है. So, you know, all these words are something that they used to confuse you during the vivas. So as I have already told you, what are they? We started with independent sources. Then we came to network and circuit. Then we came to linear and non-linear elements. Then we went to which are the linear elements and which are the non-linear elements. Followed by active and passive element, where we saw the BJT, the bipolar junction transistor, the JFET, junction field effect transistors, op-amps, operational amplifiers. We came to unilateral and bilateral elements. Direction of current पे dependent है ये. And active and passive network. Now there is one more word which is called lumped and distributed elements. Lumped मतलब क्या होता है? जैसे वो फिजिकली सेपरेटेड है, मतलब रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कैसे एक दूसरे से वो ज्वाइन नहीं है, दे आर कॉल्ड लम्प। Element is physically separated, like resistors, inductors, and capacitors. In case of
डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अपना केबल होता है ना, ट्रांसमिशन केबल होता है, जैसे आपने कोएक्सियल केबल देखा रहेगा, आपके टीवी से एक केबल जा रहा है ब्लैक कलर का, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके अंदर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस अलोंग इट्स लेंथ। आई रिपीट वंस अगेन, लम्प्ड मतलब रेजिस्टर अकेला, कैपेसिटर अकेला, इंडक्टर अकेला, जो आपने पढ़ा है आज तक अपने लाइफ में वो लम्प्ड है। साइंस में जो भी आपने पढ़ा है, फिजिक्स में जो भी आपने पढ़ा है, आज तक आप जो भी पढ़ते आ रहे हैं, वो सब लम्प्ड एलिमेंट है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने एक सर्किट बोर्ड ले लिया, मतलब आपने पीसीबी वगैरह देखा रहेगा, वो इट्स अ कॉम्बिनेशन। या आपने कोएक्सियल केबल, एक्चुअली हम यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं ट्रांसमिशन लाइंस, जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होके आ रही है, वो ट्रांसमिशन लाइन फक्त एक वायर नहीं है, it's not just a wire, it's a combination of resistor, inductor and capacitor. So those are called as distributed elements. They are called as distributed elements. याद रहेगा आपको, lumped and distributed. तो क्या क्या बताया मैंने? नेटवर्क एंड सर्किट, लीनियर एंड नॉन लीनियर, एक्टिव एंड पैसिव, unilateral and bilateral, lumped and distributed, active and passive networks. So whatever you have been doing till now is always lumped. Now, when we talk about transmission lines, then we are talking about distributed elements. Can I move ahead? Any doubt till now? Because these are basics, we cannot repeat them. We assume that you understand as we go ahead. As I said, this is the maximum weightage chapter of the entire subject of BEE, and this is where usually students make calculation mistakes. That's why we are taking this chapter first. Go on. Can I proceed? Please give me an acknowledgement. Can I proceed? Okay, thank you. Let's come to series combination. सबको पता ही है. Series combination of resistors, everyone knows, is V is equal to V1 plus V2 plus V3, and R is equal to R1 plus R2 plus R3. So I don't have to show you series combination. Another thing we have to do is VDR. So make a circuit for VDR. This is your R1, this is your R2, this is your R3. I will be deriving each of it. So I will be showing you each of it. And this will be your V. So the current flowing through this is nothing but your I. Now let us understand what is V1, what is V2, and what is V3. This is your V1. This is your V2. And this is your V3. So I'm directly writing the formula. What is V1? If you remember, I have taught you during CT time. V1 is total voltage V into जिस resistor के ऊपर है वो R1 upon R1 plus R2 plus R3. So I'll be deriving this in the following lectures. In today's lecture, I'm just giving you the formula. Second, V2 is equal to V into R2 upon R1 plus R2 plus R3. यानी कि you have to take the same resistor. And if you take V3, it is V into R3 upon R1 plus R2 plus R3. So please take these formulas down because it's important for our further calculation. But याद रखना इसका derivation भी हमें करना है. In the examination, there are a few questions which are not easily solvable. Engineering is application-oriented paper and it is not direct paper. So you have to think about what to use. So we'll come to know with time कि
सर्किट्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सर्किट्स में आपको बताया नहीं जाएगा कि क्या यूज करना है. Anyone can solve by any method. So take it down and tell me once it is done. So just take down the formulas. Just tell me when it is done. VDR is called voltage divider rule. Voltage divider rule. Very, very important part of the subject of BW. Okay, it's done. Parallel combination. Everyone knows the parallel combination because we have done in physics. So these are very simple part of the chapter, which is like 1% of the chapter. So here we have R1, here we have R2, and here we have R3. And you know that if this is the current and this is the voltage, then the parallel is nothing but 1 upon Rp is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Where I is nothing but equal to I1 plus I2 plus I3, which will be the respective currents to each of them. Now, if I want to find what is I1, I2, and I3 separately. So first I will show you CDR for two resistors. Again, as I am telling you that we have to derive this. But suppose I am taking for only two resistors, which is the easiest. And this is your voltage, this is your R1, this is your R2, this is your I, this is your I1, and this is your I2. So I1 is nothing but I into R2, neighbor wala lena hai, upon R1 plus R2. And I2 is nothing but total current into neighboring resistor upon R1 plus R2. ये दो रेजिस्टर्स के लिए काफी इजी हो जाता है. दो रेजिस्टर्स में आपको ज्यादा इश्यूज नहीं आएगा. बट अगर तीन रेजिस्टर्स हुए, मतलब मैंने एक और रेजिस्टर डाल दिया यहाँ पे R3, then मेरा I1 formula will change. My I1 now becomes I into, क्या guess कर सकते मैं यहाँ पे क्या डालूं? Anybody can guess कि what should I write over there? I1 is equal to I times of how much? Very good, Priya. नेबरिंग लेना है तो दो नेबर है, इसलिए यहां लेना पड़ेगा R2 R3. और नीचे किसी को याद है क्या लिखना चाहिए? ये ऊपर तो R2 R3 है, नीचे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1. सो अनलाइक VDR, CDR थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. क्या ये R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 पैरेलल कॉम्बिनेशन है? आप ये जो लेते हैं ना 1 अपॉन R1 प्लस, उसका न्यूमरेटर सोचो क्या होगा. न्यूमरेटर जो आपको उस कैलकुलेशन में आ रहा है वो यही होगा. सो इफ आई एम राइटिंग I2, I टाइम्स ऑफ क्या आएगा? डिनोमिनेटर सेम रहेगा. इट इज R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द न्यूमरेटर? I2 है तो आपके पास R1 R3 होगा. करेक्ट. और अगर आप I3 लेते हैं, I3 के लिए, so I3 के लिए क्या हो जाएगा? I3 will be nothing but I times of R1 R2 and denominator will remain the same. I hope this is clear to you. इसको हम CDR कहते हैं, current divider rule. Again, I will be deriving it in the following lecture, क्योंकि ये derivations आपको आने चाहिए. In the vivas they ask you, and if you're unable to answer, then you will not be able to score. Imagine
150 मार्क्स पेपर में 70 मार्क्स इंटरनल है और 80 मार्क्स एक्सटर्नल है. तो all depends on your viva, on your term work and also on your internal test. जैसे last year all my students got 20 out of 20 in their internal test. Because अगर आपको 20 मिलता है मतलब 100 मार्क्स के पेपर में आपका 20 सिक्योर हो गया, फिर 80 के लिए काम करना है. So I will give you a blueprint of the paper in the sense what kind of question comes from a particular chapter. So that will enable you to get that high score. So the highest score last year was 78 on 80. So if you look at the paper, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइप कहाँ आने वाला है. So that is the code that I will be giving you, which will help you to tackle the paper before you enter the examination hall. You know what is going to come where, and that will really help you. या कौन सा टाइप आने वाला है. So हम फोकस टाइप पे करेंगे जिस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे. KCL, everyone knows Kirchhoff current law. इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव लेते हैं. जंक्शन इज नथिंग बट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मैंने शायद आपको बताया रहेगा. टी और प्लस ढूंढना है. क्या ढूंढना है? टी और प्लस. तो जहां टी है वहां करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहां एक प्लस साइन आ रहा है वहां करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ये एल शेप अगर कुछ दिखा तो करंट कोई चेंज नहीं हो रहा है. करंट इज नॉट चेंजिंग देयर. ओनली यू हैव टू चेक फॉर टी एंड यू हैव टू चेक फॉर अ क्रॉस. उसको हम जंक्शन बोलेंगे. केवीएल प्लस टू माइनस माइनस लेते हैं, माइनस टू प्लस प्लस लेते हैं. सो इफ वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर सर्किट हियर, तो अगर फॉल इन पोटेंशियल है तो हम माइनस ई लेते हैं, और अगर राइज है तो हम प्लस ई लेते हैं. सिमिलरली इफ यू आर लुकिंग एट अ रेजिस्टर, प्लस टू माइनस क्या लेते हैं? माइनस आई इंटू आर लेते हैं. और राइज होगा माइनस टू प्लस, तो हम इसको प्लस आई इंटू आर लेते हैं. याद है? करंट यहां से आ रहा है तो प्लस डालने का, फिर इधर माइनस डालने का. तो अगर हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो माइनस आई आर, अगर आप ऐसे आ रहे हैं तो प्लस आई आर. करंट यहां से आ रहा है तो करंट इज लाइक वाटरफॉल, पॉजिटिव टू नेगेटिव डालना है. करंट इज लाइक waterfall, so it has to be taken as from positive to negative. I hope you remember KVL. So let's start off now. As I said, those who have joined late, I need calculator FX991ES, so I can explain to you what functions to use and so on. But today's lecture I have limited it to um, non-calculator. So यहाँ पे question है find R. और ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक आता है. Can you guess how to start with this question? Look at this electrical circuit. Can you see a loop? This is 100 volt, okay? This is 100 volt. It's just a misprint of my notes. So notes will be provided to you. All are printed notes of all the chapters. It's already ready. I just have to, I will try to make a soft copy and send to you. Right now, it's in hard copy form. So now let us look at this circuit. ये सर्किट में अगर आप ये सर्किट लेते यहाँ पे, ओके, और यहां से करंट क्या आ रहा है? कैन यू सी 5 एम्पियर्स कमिंग? 5 एम्पियर आ रहा है लेफ्ट साइड में से. सी यहां से 5 एम्पियर आ रहा है, यहां से 5 एम्पियर आ रहा है. जंक्शन दिख रहा है सामने. देयर इज अ जंक्शन हियर, देयर इज अ जंक्शन हियर, बिकॉज क्रॉस आया वहां पे, प्लस साइन आ रहा है वहां पे. एक टी है, एक प्लस है. कैन एनीबडी टेल मी
हाउ इज द करंट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट? वो कैसे पता चलेगा कि कितना करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? किसी को आंसर करना है तो मुझे बताएं, मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ. जस्ट रेज योर हैंड. Because in engineering, I would like an interactive session. So you can raise your hand. I will unmute you. You can tell me that how will I find? अगर 5 amperes आ रहा है, distribute हो रहा है, तो how should I find? Akash, would you like to answer? You can unmute yourself. I have given you permission. Yeah. Hello, ma'am. Yes, Akash, tell me. 5 ampere and 15 ampere are in parallel. So we can use CDR 5 ampere and 15 ampere. because current are changing. Can you see something here, Akash? यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं आप. यहाँ पे I'll tell you how to begin. ये दिख रहा है? Yeah. वो रेजिस्टर के अक्रॉस आपको 30 वोल्ट भी दिख रहा है और 15 ओम्स भी दिख रहा है. तो वहां से जाने वाला करंट क्या हम ढूंढ सकते हैं? वहां से शुरुआत होगी थिंकिंग. Okay. कितना होगा वहां पे करंट? 2 ampere. वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. थैंक यू आकाश. सो आकाश इज स्टार्टेड फॉर अस, सो यहाँ पे हमें पता है कि ये 2 एम्पियर यहाँ पे होने वाला है. कैसे पता चला? बिकॉज वहां वोल्टेज है उस रेजिस्टर के अक्रॉस. यानी कि यहाँ पे जाने वाला करंट इज गोइंग टू बी 30 डिवाइडेड बाय 15, मतलब ये 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है. सो ये हमारा पहला पॉइंट होगा. अगर यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 7 एम्पियर जा रहा है. 5 + 2. अगर 5 + 2 जा रहा है, अभी आप सोचो, वापस जंक्शन आया, राइट? 7 एम्पियर आ रहा है और देखो 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है. 2 एम्पियर इज गोइंग अप, मतलब नीचे कितना जा रहा है? एनीबडी? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. आई विल अनम्यूट यू. कैन एनीबडी टेल मी कि कितना करंट विल बी गोइंग टू दिस रेजिस्टर हियर? कितना करंट इधर जाएगा? यस, यस, आशीष, आकाश, वेरी गुड. अगर 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है और आप देख रहे 3 एम्पियर, 3 एम्पियर भी देखो. ओके, अरुण एंड यशवी, देखो 3 एम्पियर यहाँ पर भी जा रहा है. ये नोटिसेबल नहीं है कभी कभी. 2 ऊपर जा रहा है, 3 वहां जा रहा है, तो अभी रेजिस्टर के थ्रू कितना जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा. एग्रीड एवरीवन? सो यहां से भी 2 एम्पियर जा रहा है. सो 5 आया, स्प्लिट हुआ, 7 आया, 7 को 2, 3, 2 में डिवाइड हो गया. नाउ अपना मिशन क्या है? अपना मिशन तो टू फाइंड आर है. कैन आई डू अ नॉर्मल केवीएल ओवर हियर? ये लूप दिख रहा है, इसमें एक नॉर्मल केवीएल करने वाली हूं मैं. यानी कि अगर चाहिए तो मैं ये सर्किट आपके लिए बाहर ड्रॉ करती हूँ, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ये सर्किट मैं सेपरेटली यहां ड्रॉ कर रही हूँ आपके रेफरेंस के लिए. ऐसा एक सर्किट है अपना, तो इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रही हूँ. ये 100 वोल्ट है. आप देखेंगे यहाँ 5 ओम्स है और आप देखेंगे सर्किट में प्लस माइनस दिया है, तो इस प्लस माइनस को आपको कंसिडर करना पड़ेगा. आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते. आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते. ये 15 ओम्स है और यहाँ का 30 वोल्ट दिया हुआ है. सो कैन वी अप्लाई आर नॉर्मल केवीएल हियर? सो इफ यू वांट, एज अपना पहला लेक्चर है तो मैं इसको थोड़ा नेम कर लेती हूँ, OABC. ओके, सो हम केवीएल लगाने वाले हैं. हम क्या केवीएल लगाने वाले हैं? O to A अगर आप लेते हैं, O to A क्या होता है? +100, याद है? माइनस टू प्लस क्या आएगा? +100. नेक्स्ट, प्लस टू माइनस, A to B. क्या लिखूं मैं A to B? एनीबडी? कोई मुझे बताएगा A to B मैं क्या लिखूं? यू कैन आंसर एनीथिंग, बिकॉज हमें पता है कि यहां से जाने वाला करंट हमें पता चल गया कि 2 एम्पियर है. तो कैन यू टेल मी A to B मैं क्या लिखूं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड यशवी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. -30 डायरेक्टली लिखो. यस आकाश, वेरी गुड. -30 डायरेक्टली लिखो क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पता है कि वोल्टेज 30 है. नेक्स्ट, प्लस टू माइनस, अगर अब B to C जा रहे हैं आप, तो B to C में प्लस टू माइनस में क्या आने वाला है? -5 इंटू कितना लू?
-5 इंटू कितना लो, वहां पे करंट कितना है? नो नो राज, नॉट 2, 7. वेरी गुड आकाश, यशवी, प्रिया। 5 इंटू 7, 5 7 जा 35 आएगा, क्योंकि वहां जाने वाला करंट क्या है? 35 है। और नीचे C to O अगर हम जा रहे हैं, C to O अगर हम जा रहे हैं, प्लस टू माइनस क्या लिखूं मैं यहाँ पे? प्लस टू माइनस जा रहे हैं, तो व्हाट शुड आई राइट? I should write -2R is equal to 0. Now I'm 100% sure you can calculate the value of R. Please calculate and tell me if it matches the answer. Please calculate and tell me whether it matches the answer. I hope it matches the answer. Yeah. At the end of every lecture that I take for 5 minutes, I will be talking about the admission process, but it will be non-recorded because there are some doubts which many of you all have been sending me. So I want to clarify some doubts, but I will not spend much time on it because I'm still waiting for the final brochure. But there are some things which are always same. So whatever I tell you, I believe it will help you. And but that I would like to keep it on non-recorded because I'm a university professor, so I would like to keep it on non-recorded. But I will surely tell you some very important points which will help you in choosing the right college, and that will happen with time, because that is better to go step by step. If I tell you everything, then you will not remember it. So today I will be giving you 3 things. So there'll be 3 points in every lecture which I will tell you. So it will help you in many ways, because there are a lot of misconception. There are many rules that have changed, and many of people are unaware about it. Okay. So I hope everyone got 17.5 ohms. Everyone got 17.5 ohms. Okay. Can I proceed? So I hope this kind of question, this was a 5 marks question, question number 1. Let's come to this. Now, when you look at this question, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. So I am just redrawing the circuit if you don't mind. So I'm just redrawing the circuit so that there is clarity of my diagram. I'm a circuit person. I always like to draw my own circuits, because then only I will basically understand where that current is going, because BEE ये तो सबसे छोटा सर्किट है आप जो देख रहे हैं. इससे भी बेहतरीन सर्किट्स मैं आपको ड्रॉ करूंगी. These are just bachas of the main thing. So I'm just writing the values down. You can also draw it, see the direction of the current. ये 4 amperes है, ये 9 amperes है, ये 16 ohms है यहाँ पर, और ये रहा यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ दिया है कि I2 है, यहाँ पे कुछ दिया है कि I3 है, और यहाँ पे दिया है I1 है. मतलब उन्होंने इसको नोड समझ के स्टार्ट किया, तो आपको भी इसको नोड समझना पड़ेगा. तो मैंने आपको बोला था कि वो नोड कंसेप्ट, बट जब वहां से करंट शुरू हो रहा है तो इट्स पार्ट ऑफ अ सर्किट. नाउ आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम lines here. You have to tell me what are these currents. Okay, इसको मैं क्या लिखूं? Anybody? अगर I1 वहां से आ रहा है, anybody who can unmute and answer? कौन करना चाहेगा?
This is open to discussion. Okay, Priya has raised her hand. I am just asking you to unmute. Yeah, I've done that. Yes, Priya. I can hear you. Can you speak? Yeah. Hello. Yes, Priya. Yeah. Ma'am, it will be I1 minus I2. Excellent. Yeah. So I1 is coming up, and we have Priya telling us that this is I1 minus I2. So that is sorted out. Okay. तो यहाँ पे splitting हो रहा है. यहाँ पे I1 आया, I2 गया, तो I1 minus I2 आया. Now I2 इधर आ रहा है. Can anybody tell me? Okay. Now I want another person to answer. Can you tell me that अगर I2 यहाँ से आ रहा है, देखो I2 यहाँ से आया, तुमको split दिखाई दे रहा है. देखो ये जंक्शन कैसा है. I3 यहाँ गया, यहाँ 4 गया, यहाँ 9 गया. आई होप दैट इज क्लियर. तो यहां से I3 आएगा, यहां से I3 आएगा, स्प्लिट यहां पे हो रहा है. ओके, हु विल आंसर कि यहां से कितना करंट जाएगा. अगर I3 यहां से आ रहा है, यहां देखो वापस टी शेप है. somebody raise hand. somebody who would like to answer, please raise hand. anybody can answer. it is open. I3 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो आप सोचे कि वहां से क्या जाएगा. It's open to discussion. It is engineering, so I would like you to unmute yourself and talk to me, because that's the way it is done, because it's very, aage jaake. Okay. So Yashvi wants to answer. Yes, I have unmuted you, Yashvi. You can unmute yourself. Please unmute yourself. I have. Yes, ma'am. Yes. I guess it will be I3 Yeah. minus 4. Sorry, I3 plus 4. Very good. Very good. So it is I3 plus 4. So I3 plus 4 is what we are considering out here. 4 plus 4 आएगा. I2 नहीं आएगा. I3 plus 4 आएगा. अब I3 plus 4 यहां से आया, यहां से 9 आ रहा है, और यहां से I1 माइनस. अब सबसे बड़ा चैलेंज कौन आंसर करेगा? What will go through here? Who has the ability to tell me the biggest one over here? Who will answer? Please raise your hand or tell me, then I will unmute you. Who will answer that उस point पर जहां पर junction meet हो रहा है, वहां क्या आने वाला है? देखते हैं. Okay. Ashish Yadav wants to answer. Ashish, I've unmuted you. You can unmute yourself. Yeah. Ma'am, I1. I1. Only I1. No, बेटा. ये यहाँ पे सिर्फ I1 नहीं आएगा, कुछ और भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ से I3 plus 4 आ रहा है, इधर से 9 आ रहा है, और इधर से I1 minus I2 आ रहा है. Anybody else wants to try? Ashish, you can still try. कॉम्बिनेशन आएगा बेटा. सब कुछ जाके एक जंक्शन पे मीट हो रहा है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा. सबको ऐड किया तो आप क्या बोल सकते हो? सोचो. I1. Okay, Nikhil, Pal wants to try. Nikhil, I have asked you to unmute yourself. Yeah. बोलो. मैम I1 minus I2 Yes. plus I3 Yes. plus 13. Plus 13 मतलब तूने 4 plus 9 किया. Very good. Yes. This is what it should come. Yes, Akash, correct. So I hope you all getting this, because ये split करने के बाद ही हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो it is like, futile. हम नहीं आगे जा सकते. I hope everyone's book has this. तो ही हम आगे. Question क्या है पता है? I1, I2, I3 को ढूंढो. Find I1, I2 and I3. So the first equation that I'm going to write here is, I'm going to look at this node. So let me call it as O. Let me call this as A. Let me call this as B. Let me call this as C. Let me call this as D, and let me call this as E. I hope सबको दिख रहा है. तो मैं क्या बोल सकती हूँ पता है? ये node at O. At O, I can say that I1 is equal to
I1 minus I2 plus I3 plus 13. I1 cancel हो जाएगा. So I can say that I2 minus I3, I'm taking it on the other side, is equal to 13. We can call this as equation number 1. यहां तक आप लिखे, फिर मैं आपको बताती हूँ. यहां तक आप लिखे सब लोग और मुझे बताएं when it is complete. तो अपना पहला इक्वेशन आया, 3 अननोन्स है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कैलकुलेटर चाहिए बच्चा. अगर आपके नेबर के पास है, दोस्तों के पास है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फैले हुए हैं, ऑफ कोर्स वो बिजी हैं, उनको लगेगा, बट देन आप खुद से खरीदेंगे तो वेरी बेस्ट, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताने हैं मुझे. आई एम श्योर द मैथ्स प्रोफेसर्स आल्सो हैव टू शो यू. नो, यू कांट यूज इट इन द एग्जाम आकाश. अभी के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपके मोबाइल में कर सकते हैं, but in the exam it will not be allowed. So if you use the scientific calculator from now onwards, वो speed आता है, नहीं तो कहाँ है buttons, कहाँ जाना है, there is lot of hidden things in the scientific calculator, जिसको हम shift use करके करते हैं. तो that's why I'm saying right now you can use the mobile calculator. I am not against it, but if you have the scientific, to teach you from online is going to take us time basically. क्योंकि हम फिजिकली आपके साथ नहीं है, तो आपको मतलब आपको दिखाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ. ठीक है. सो आई हैव माय ओन साइंटिफिक कैलकुलेटर, सो आई विल हैव टू शो इट ऑन वीडियो. इसलिए अगर आप भी लेंगे तो आपको समझेगा कि मैं क्या कैसे कर रही हूँ उसको. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अभी के लिए आप यूज कर सकते हैं. तो ये लिख दिया सबने. अब मैं आगे बढ़ रही हूँ. आगे इन द सेंस मुझे ये क्वेश्चन के आगे बढ़ना है. सो एक इक्वेशन आ गया. आई होप सबने लिखा. अब इस सेकेंड इक्वेशन कहाँ से लिखने वाली हूँ, देखो तुम मैं क्या करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू टेक दिस एंटायर लूप, मतलब ओ ए बी सी डी ई ओ. ओ टू ए, ओ टू ए क्या लिख सकते हैं? ओ टू ए, आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट ओवर हियर. ये आई एम गोइंग टू इरेज बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन. ओ टू ए क्या लिख सकते हैं? प्लस टू माइनस क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट -12 I1. केवीएल लगा रहे. -12 I1. ए टू बी कुछ नहीं है, बी टू सी कुछ नहीं है, सी टू डी +2 -16I3. डी टू ई कुछ नहीं है, ई टू ए कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0. समझ में आया? ये मेरा सेकंड इक्वेशन बनेगा. आई होप यू गॉट दिस. अब मुझे थर्ड इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 3 अननोन्स है भाई. सो दैट्स व्हाई आई सेड कैल्सी होगा तो हम फास्टर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते थे. तीसरा ये लूप में होगा, ओ ई ओ, ओ ए ई ओ, ओ ए ई ओ. तो मैं वो इक्वेशन यहां लिख रही हूं, आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिख रही हूं. -12 I1 दैट इज फ्रॉम ओ टू ए, फिर -8 I1 - I2 इज इक्वल टू 0. मतलब मेरा नेक्स्ट इक्वेशन बनने वाला है -20 I1 +8 I2 is equal to 0. This is equation number 3. So if we had the calculator, we would be solving I1, I2 and I3. If you have a scientific calculator, you can so try as well. Please write the 3 equations and tell me when it is done. So when you solve it in the calculator, we should get these answers. I1 4 आता है, I2 10 आता है और I3 -3 आता है.
Done? Have you completed? KVL अप्लाई किया हमने 3 लूप में. Can I proceed? Okay. Okay, before I go to this, we can do a smaller one. Okay, let's look at this. Circuit दिख रहा है आपको? इसका splitting करना है. So I'm just making that circuit a little bigger for my access. आपकी clarity के लिए. अभी आप सोचो इसका splitting कैसे होगा? कोई मुझे बता सकता है कि मैं यहाँ क्या लिखूं? You know, यहाँ क्या लिखूं? X यहाँ से आ रहा है. 30 गया. तो 0.01 में मैं क्या लिखूं? Yes, X minus 30. Right? X minus 30 डाल दिया. अब X minus 30 में 70 आ रहा है तो यहाँ क्या लिखूं? X minus 30 में 70 आ रहा है तो यहाँ क्या लिखूंगी? यहाँ पे क्या आने वाला है? X minus 30 plus 70. So X plus 40. अब X plus 40 में 120 जा रहा है तो यहाँ क्या लिखूं? X plus 40 में 120 जा रहा है और x plus 40 आ रहा है तो आएगा फिर जाएगा तो x plus 40 minus 120. Very good, देवेन, रंजीत. x minus 80. x minus 80 में 60 आ रहा है. So what should I write here? What should come here? Yes, it will be x minus 20. x minus 20 में 60 जा रहा है. So what is over here? x minus 20 minus 60. X minus 20 plus x minus 20 minus 60. So x minus 80. बराबर है. और x minus 80 फिर आ रहा है तो plus 80. तो क्या आपको यहाँ x मिल रहा है वापस? It should come back to x. Everyone getting it? It should come back to x. अगर ऐसा मिला है आपको, then we can write one single equation which is equal to 0. One single equation लिखना है हमें. We will start with, so I'll just give it some names for your understanding. O, A, B, C, D, E. मैंने सिर्फ alphabets दे दिए. This is simple branch current method. ये सिर्फ question number 1 में आता है for 2 to 5 marks. So let us see how to write it. I am going in reverse direction. चलेगा? ऐसे जाने वाली clockwise. O से start करके O to A. O to A क्या लिखेंगे? So I am going in the reverse. यानी कि मैं आपको बता रही हूँ सब positive आएगा. Because I am going O to A. So minus to plus जाने वाले हैं. Current के opposite घूमेंगे तो positive आता है. Current की direction में घूमेंगे तो negative आता है. तो मैं current के opposite घूमने वाली हूँ. O to A जा रही हूँ.
O to A जाएंगे तो 0.01 of x minus 30, right? Plus 0.02 of x plus 0.02 of x minus 80 plus 0.01 of x minus 20 plus 0.03 of x minus 80 plus 0.01 of x plus 40 is equal to 0. नहीं, एक और आएगा. So I'm just नहीं, is equal to 0. Can you calculate this equation and see whether x matches to 41? Please calculate, everyone, and see whether it matches to 41. कैलकुलेटर में ये डायरेक्टली हम डाल सकते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टकट मेथड होता है, तो वहां पर तो हम डायरेक्टली डाल सकते हैं. सी वेदर यू आर गेटिंग दिस. So in this entire chapter we will be doing at least 100 questions. 100 है हमारा target. We have 100 numericals of at least 25 types in the chapter of DC circuits. So this is just sneak peek, I can say, just a trailer of what is ahead. 100 numericals karna hai per chapter. Same thing in AC circuits, we have 100 numericals, that is 200. In three phase we have roughly kitna hoga 50. Then this is types I'm talking about, and single phase transformer we have around 75. So इस केस और लास्ट जो डीसी मशीन है उसको न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो प्योरली थियोरेटिकल है, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे. जस्ट टेल मी वेदर यू गॉट x41. कैलकुलेट करो, x41 मिल रहा है क्या? Are you getting x as 41? Yes, so Dipesh has got, yeah, you get x as 41 ampere. तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस. तो अगर हमें 41 मिला तो हम बाकी ब्रांचेस में x की जगह पे 41 डाल के हम सारे करंट्स निकाल सकते हैं. तो एग्जामिनेशन में लिखना है करंट थ्रू 0.02 इज 41 minus 80. नेगेटिव आने दो, इट्स ओके. करंट थ्रू 0.01 इज 41 minus 20. करंट थ्रू 0.03 इज 41 minus 80. ऐसे सेपरेटली लिख के फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करना है. याद रखना, फाइनल आंसर को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको बॉक्स में डालना है, क्योंकि उनकी नजर फाइनल आंसर पे होगी. स्टेप्स आगे पीछे आप कम ज्यादा कर सकते हैं. इंजीनियरिंग में हम स्टेप्स को मतलब इन द सेंस इट्स नॉट स्टेप वाइज मार्क्स, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव डन इट. आपका लॉजिक एक दूसरे से अलग हो सकता है, and you will be given marks if your calculations are correct. So it is not like 4 step या 2 step पे. It's not stepwise marks like in 12th standard. Here it is completely based on logic, intelligence of the student, analytical performance, and logical reasoning of the student. So that's why the marking scheme is slightly different in engineering compared to your school or your 11th, 12th level. I hope ये आपको समझ में आया. Can you take one problem for homework? ये आप होमवर्क के लिए ले ले. इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. Find the currents in all the branches. Please take this circuit down. Please take this circuit down. ये ब्रांच करंट मेथड है जो आपने आज किया, इसलिए आप हेडिंग दे सकते हैं ब्रांच करंट मेथड. आप हेडिंग दे सकते हैं एज ब्रांच करंट मेथड. Branch current method. Tell me when you have taken down the question. So this brings us to the end of today's lecture. Today we have gone through the scheme, that is your take back from today, or what you are taking back home today is the syllabus scheme of the chapter.
or of the subject of BEE, which is Basic Electrical Engineering. 150 marks का ये सब्जेक्ट है और इसमें जो टॉपिक्स हैं उसके 10 टॉपिक मैंने आपको लिस्ट आउट किए हैं. I have all the printed materials. I have been teaching this subject for around 15 years now. So this is a very important and subject as far as semester 1 of first year engineering is concerned. And I'm taking this topic because circuits are something which has always been a little difficult for students, and there are complicated circuits ahead. So I will be able to help you in this particular chapter very well. So I am stopping the recording.